नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शेफ अभिजीत साहा, जिनका जन्म वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में हुआ। अ, उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली आईएचएम होटल मैनेजमेंट में किया। उसके बाद अमेरिका में फूड सर्विस टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और ओनोलॉजी जॉन्स एंड वेल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, मैनर होटल्स और पार्क होटल्स के साथ भी बहुत सालों तक किया है। और शेफ अभिजीत साहा गेस्ट जज बने हैं मास्टर शेफ इंडिया और टेक्निकल जज ऑफ यंग शेफ ओलंपिडिया। और उनको अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे शेफ ऑफ द ईयर बाय बीबीसी गुड फूड इंडिया, बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर एट टाइम्स फूड अवार्ड्स 2016 और बेस्ट शेफ ऑफ इंडिया एट इंडियन रेस्टोरेंट कांग्रेस। शेफ अभिजीत साहा, नमस्कार, आज आपका स्वागत है इस सो अभिजीत जी, अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल, ये मेरा सबसे पहला सवाल ही होता है जिनके साथ भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, वो कि आपने सबसे पहले शेफ बनने का कब सोचा था? कब आपके दिमाग में आया कि मुझे शेफ बनना है और कैसे आया? राइट, अपने हाई स्कूल डेज में आप क्या सोच रहे थे, कहाँ पे थे, किस पार्ट ऑफ इंडिया से आपने हाई स्कूल की, और आप एज ए यंग स्टूडेंट क्या सोच रहे थे और कब ये सोच आया कि मुझे शेफ बनना है? Good evening, everybody, and namaskar. Thank you for having me over in this wonderful Connect program with children or students who are planning to have a career in the near future, who are the future for this world. मैं एक शेफ, एक रेस्टोरेंटियर और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बचपन में ही शेफ बनने का सोच लिया था। जब मैं स्कूल में था तब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया था दार्जिलिंग में, तो वहाँ पे तो शेफ वो था 1978 से लेके 1985 तक मैं वहाँ पे दार्जिलिंग में पढ़ाई करा। तो स्कूल में तो कोई ऐसा हमें पता नहीं था कि शेफ का क्या प्रोफेशन होता है। ये तो बहुत पुरानी बात है। और हमारे पेरेंट्स तब बोलते थे कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर इस तरह का कुछ बनना है। और तब तक तो बहुत सारी चीज़ें और प्रोफेशंस भी जितना आजकल प्रचलन हुआ है वो पहले नहीं थे। जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स भी बहुत कम हुआ करते थे उस टाइम पे। राइट। तो एक बारी मुझे मौका मिला, एक सज्जन से जब मैं ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में, वो मिले थे, तो वो होटल मैनेजमेंट का रखा था उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो उसके बाद से मैंने सोचा था कि ये एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मैं होटल मैनेजमेंट करूंगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं शेफ के लिए बनूंगा, शेफ के लिए बनूंगा। तो मैं सोचा था कि होटल ज्वाइन करेंगे, मैनेजर बनेंगे या जो भी है ये करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने मेडिकल का भी एग्जाम दिया था और जो है होटल मैनेजमेंट के लिए भी मैंने अप्लाई करा था। तो मेरा होटल मैनेजमेंट में हो गया था दिल्ली में, आईएचएम पूसा में मैंने पढ़ाई करने का मुझे मौका मिला। तो तभी मेरा इंट्रोडक्शन हुआ होटल इंडस्ट्री से। उससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि होटल इंडस्ट्री क्या होता है, और सभी कुछ बाहर से ग्लैमरस और ये सुनने को मिलता था कि 5 स्टार होटल है और सब कुछ वहाँ पे बहुत ही महंगा है और सब कुछ शानदार है। तो पॉइंट ये है कि मैंने ये डिसाइड करा कि ठीक है, करके देख लेते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ। वहाँ पे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे को लगता है कि बाय चांस या फ्लूक के साथ मेरे को हाईएस्ट मार्क्स जो है जो कुकिंग में मिल गया मुझे। फूड प्रोडक्शन कहते हैं टेक्निकली। तो मुझे तो मालूम नहीं था ज़्यादा कुछ, लेकिन मेरे को पता नहीं कैसे हो गया कि मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिला। तो तब से मेरे जो टीचर्स थे फूड प्रोडक्शन के, वो मेरे ऊपर बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए। तो उन्होंने बोला कि यू हैव डन सो वेल इन योर फर्स्ट ईयर इन योर दिस थिंग, सो व्हाई डोंट यू
look into the possibility of pursuing it as a career, as your career as a chef. So Right. it was something that I heard from them, and that is what it is. So basically, from then onwards, I started focusing a little bit on my food production classes. Okay. Then उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज में कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, तो ताज Right. होटल्स वगैरह, ताज तो बहुत ही सबको मालूम है कि हमारा देश का पहला Same. प्रसिद्ध होटल चेन है, 5 स्टार होटल चेन. तो बिल्कुल. उनका इंटरव्यू था कॉलेज में, कैंपस में. तो मुझे मेरा रोल नंबर था 7. तो जो पहला नाम अनाउंस हुआ जॉब के लिए, तो वो मेरा ही नाम अनाउंस हुआ. तो मेरे को उसके बाद 1 महीने की छुट्टी मिल गई, क्योंकि उसके बाद एक के बाद एक कैंपस इंटरव्यूज होते रहे, और मेरे को तो देना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में मिल गया था एज अ किचन मैनेजमेंट ट्रेनिंग. तो मैंने ज्वाइन किया उनको 1990 में. तो वहां से जो है शुरू हुआ मेरा शेफ का करियर. तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं घर पे मेरे मम्मी से सीखा या फिर मेरे ग्रैंडमदर से सीखा, ऐसे कोई मेरे पास मजेदार कहानी नहीं है. तो मैं कॉलेज में जाने के बाद और होटल ज्वाइन करने के बाद ही मेरे को आइडिया लगा और मैंने इंटरेस्ट डेवलप करा टू बिकम एज अ शेफ. Very, very nice. And so frankly and honestly that you shared, कि आपको शेफ का इंटरेस्ट नहीं था, आइडिया भी नहीं था, बट जब आप IHM में गए, मैं सभी छात्रों को बताना चाहूंगा कि IHM हमारे देश का नंबर 1 होटल मैनेजमेंट कॉलेज है. कठिन है जाना इसके अंदर, और एक इनका अपना अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पे. जैसे JEE एग्जाम होता है इंजीनियरिंग IITs के लिए, NITs के लिए, वैसे ही होटल मैनेजमेंट के लिए जितने भी IHMs हैं उनका एग्जाम होता है NCHMCT, JEE HM बोलते हैं उसको. सो ये एग्जाम भी काफी कठिन होता है. इसमें 3 घंटे का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश, और कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें जा सकते हैं. कोई भी स्ट्रीम के बच्चे, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम आपका हो, किसी भी स्ट्रीम से आप जा सकते हैं इसमें. और ये एग्जाम के बाद वेरियस IHMs हैं इंडिया में, और उसमें कहीं पे भी आपको एडमिशन मिलता है. वहीं से अभिजीत जी ने भी अपनी पढ़ाई की, और जैसा उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर में जाके आई थिंक अभिजीत एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखा है जनरली, सो मैं जब भी कोई होटल्स में जाता हूँ वेरी क्यूरियस. सो मैं अगर कोई वेटर होते हैं या कोई मैनेजर होते हैं उनसे पूछने लगता हूँ कहाँ क्या बैकग्राउंड है. तो जनरली जब भी मैं ये पूछता हूँ तो जो यंग स्टूडेंट्स वहाँ दिखते हैं मुझे, बिल्कुल यंग पीपल, सो दे आर ऑलवेज इंटर्न, राइट. एंड व्हाट दे से इज कि जब हम इंटर्नशिप करने आते हैं तो हमें वेरियस जॉब प्रोफाइल जो एक होटल में होता है, राइट फ्रॉम रिसेप्शन, फेसिंग द कस्टमर, वहां से लेकर शेफ तक, वेटर तक, बार तक, डिफरेंट रोल्स पे हमें एक्सपोजर दिया जाता है, राइट, इंटर्नशिप में, जो कि बहुत जरूरी होता है, राइट. आई मीन होटल मैनेजमेंट इंटर्नशिप इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू एडिशन, राइट. उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? या ये बहुत ही, जिस साल से मैंने ज्वाइन करा था पहले जो ये इंटर्नशिप है, ये 6 वीक्स या 8 वीक्स का हुआ करता था. और जिस साल से मैंने ज्वाइन करा था होटल मैनेजमेंट, उसी साल से 6 महीने का ये इंटर्नशिप शुरू हुआ था. तो इससे क्या हुआ कि हमें हर एक डिपार्टमेंट में 4 जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, फूड प्रोडक्शन यानी कि किचन, फूड एंड बेवरेज सर्विस यानी कि जो रेस्टोरेंट में सर्विस करते हैं, बैंक्वेट्स में सर्विस करते हैं, फिर हाउसकीपिंग जो रूम्स को साफ रखते हैं, होटल का लॉबी को शानदार करके रखते हैं, और फिर है फ्रंट ऑफिस जहाँ पे आपका रिसेप्शन है, कैश है और लॉबी है. तो ये 4 मेन डिपार्टमेंट्स में हमने ट्रेनिंग करा था. और फूड एंड बेवरेज में भी अलग अलग जगह होते हैं, जैसे कॉफी शॉप होते हैं जिसको कि ऑल डे डाइनिंग कहते हैं, वो 24 घंटे खुले रहते हैं. फिर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे कि थाई रेस्टोरेंट हो गया, इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो गया, चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, इस तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं. और फिर जो है बैंक्वेट्स भी होते हैं, जहाँ पे पार्टीज और शादियाँ, इस तरह के जो कि है फंक्शंस और इवेंट्स होते हैं. तो ये जो है अलग अलग एरिया में आपको करने को मिलेगा. अभी किचन में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग क्विजीन्स, डिपेंडिंग ऑन द होटल और किस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी अलग अलग क्विजीन, चाइनीज, इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन,
मैक्सिकन, इटालियन, फ्रेंच, ये इस तरह के क्विजीन्स के बारे में आपको पता चलता है। और जो है फिर फ्रंट ऑफिस में आपको लॉबी मैनेजर अलग होते हैं, रिसेप्शन अलग होता है, कैशियरिंग अलग होते हैं, कॉन्सियर्ज इंफॉर्मेशन देते हैं सबको रिगार्डिंग द कोई शहर में क्या है नहीं है किसी को, तो वो भी एक सेक्शन होता है। और हाउसकीपिंग में आपको रूम्स भी देखना पड़ता है, पब्लिक एरियाज देखना पड़ता है, सभी एरियाज की क्लीनलीनेस और वो उसको चमका के कैसे रखना है, that is something you're supposed to see. So what happens is that you get a complete exposure of the hotel industry. It also gives you an idea as to which stream you want to pursue, because hotel management is a combination of all departments. So you study about, besides these 4 areas, you study about marketing and sales, you study about computers, how to use the softwares that are used in hotels. Then you also learn about what you call is other things as well, like hotel accounting, food and beverage management, and all of these things also you learn about. So what happens is that it gives you an idea about which stream you want to pursue once you have completed your 3 years or 4 years, whatever the length of the course may be that you're pursuing. Right. And I think you really touch upon various departments, and I think बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है कि होटल मैनेजमेंट जो पूरी फील्ड है वो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, राइट? आप उसको एक होटल को देखिए और होटल चलाने में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और क्या क्या चीज वहां पे होता है, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। और हर एक फंक्शन में वहां अलग जॉब रोल है जिसके लिए हायरिंग होती है। सो IHM में जब आप कोर्स करेंगे, बच्चों को बता रहा हूं मैं कि जब आप होटल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, तो आप इन सारे सेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एंड जैसे कि अभिजीत जी ने इंटरेस्ट इनको कुकिंग में आया, उनको स्कोर ज्यादा आ गया, उससे वो ज्यादा इस पे आए इंटरेस्ट, वो रीजन जो भी हो, बट उस एक कुक प्रोडक्शन, राइट? आई थिंक दैट इज द एरिया दैट इज food production, right? So food production is what he then took it from there on. So Abhijit ji, my next question is that आपका बहुत लंबा जर्नी रहा है, right? And I think it's a dream journey for anyone who aspire to be a chef, क्योंकि हर का यही ड्रीम होता है कि मैं एक बड़े होटल में as a chef काम करूं. Obviously you join at a junior level as a chef, then you become master chef over there, you head the chef and the entire division, and then you become you have also owned restaurants now. You own restaurants, you run a company which owns some of the very popular restaurants in the country now. Even you run you ran a restaurant in Singapore as well. So tell us about the entire journey. It's a very long journey, how that journey really moved from one place to another place to another place. So the thing is that in life you have to always remember that you have to keep learning at different stages. And you should not ever give up in terms of feeling that this is the end of the story or this is the only line I want to pursue. You must self-learning and self-growth can be the biggest motivation for you to stay inspired in life. So basically that is very critical. I am a person who's never very happy with the status quo for a long time. So that doesn't mean that I don't focus on the area that I'm working on, that is this thing. And I have not been a very fast mover in terms of trying to be unstable in any area. Any area that I have worked on, it has been for long durations. Like with Taj Group of Hotels, I worked for 8 years. So again, with the Manor Hotels, I worked for 3 years. Then with the Park Hotels, again, I worked for 8 years. And I've now been a chef entrepreneur now and a consultant for the last 12 years. So basically, you have to explore yourself. So once you become a chef, it becomes the dream of most chefs to own a restaurant someday. I got an opportunity after 18 years of working with the hotels, first as a chef and then as a chef and a food and beverage director. तो food and beverage director का काम होता है कि सिर्फ वो सर्विस नहीं देखते हैं वहाँ का, वो होटल का जो food and beverage business plan है, that is also part of the yes. So business management as well as the technical aspect of the service management. तो ये मैंने करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं 18 साल काम कर चुका हूँ, अब मैं अगर ये नहीं ढूंढा या फिर हमने चांस नहीं लिया एंटरप्रेन्योर बनने का,
तो वो बहुत लेट हो सकता है। तो तभी मेरे पास मौका मिला कि मैं जो कि है मेरे इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के साथ मैंने बात करी और फिर हमने जो है वो रेस्टोरेंट कंपनी खोला, अवंगार्ड हॉस्पिटैलिटी. So it was a very nice and a good experience. So my area of specialization was always based on quality. मेरा जो फोकस हमेशा लाइफ में ये रहा है कि जो भी करना है वो क्वालिटी के साथ करना है, उसके साथ एक क्वालिटी एसोसिएट होना चाहिए. तो जब तक आप वो क्वालिटी नहीं आप ढूंढेंगे काम में, मेरे लिए वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. तो कभी भी जो है हर काम जो करे, क्वालिटी सिर्फ बड़े काम में नहीं होता है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर बनने में या किसी रेस्टोरेंट का मालिक बनने में नहीं होता है. आप छोटे से छोटा काम करे, बड़ा से बड़ा काम करे, whichever work you want to do, it is got to be done with a dedication, a sense of quality in it. Right. So that is very very critical. तो अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आपका लाइफ में भी ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन और एक लेवल ऑफ क्वालिटी आएगा जो कि बहुत ही फुलफिलिंग है और जो है जिससे बहुत अच्छा लगता है. So in the entire journey, while you moved from working in a hotel to running your own restaurant, वो जो ट्रांजिशन था खुद एक शेफ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या एक्स्ट्रा स्किल चाहिए होते हैं? I mean, this is a very important question which students should understand, which I believe that not many students have an understanding कि अगर हम एक होटल में काम कर रहे हैं और एक होटल खुद चला रहे हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? what are the other things, additional things that we require? उसमें काफी फर्क होता है. पहले तो मैं ये बात बताऊं कि पहले तो एक शेफ का रोल लोगों को समझना चाहिए. जब आप जूनियर लेवल पे होते हैं, फर्स्ट फ्यू इयर्स, then your job is only to cook and manage your own section or the dishes that you're cooking. Then it is very different from cooking at home where you're not cooking one dish. There also you are cooking multiple dishes based on orders that are coming in, and that requires a different kind of skill and management. So you have to also be a business minded person. Even if you're a chef, you have to maintain a certain cost level. You cannot go beyond the cost level. जो कि cost आप increase कर देंगे तो आपका profitability घट जाएगा. So you have various costs and margins that you have to stay within. We have to make sure. और एक efficiently kitchen चलाने के लिए एक जो कि है लीडरशिप क्वालिटी चाहिए होता है. एक मैं तो किचन स्किल्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो कि है यू शुड बी एबल टू बी अ गुड ट्रेनर, अ गुड कम्युनिकेटर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप आपको टीम को साथ लेके चले. आपके पास दो हाथ हैं, दो ही आंखें हैं. तो एज आई से दैट अ शेफ इज ओनली एज गुड एज हिज टीम इज. सो दैट इज व्हाट इट इज. तो आपको पूरा ब्रिगेड को, किचन ब्रिगेड को साथ में लेके चलना पड़ता है, उनको इंस्पायर करना पड़ता है to deliver the quality that you have envisioned or the quality that you would like your guests to experience. So you can only possible with the help of a good teamwork and a good motivated kitchen workforce who are also thinking in the same way as you are. So this is very very critical. And शुरू में तो जो है आपको फोकस स्किल पे ज्यादा करना चाहिए. उसके बाद जो है स्किल प्लस मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट का जो काम आपके पास ये राइट. सो एंड अकॉर्डिंग टू शेफ की बात. राइट गो अहेड. ये तो हुआ शेफ की बात. शेफ में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं. फिर जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो उसमें क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत जो है कभी भी अगेन इफ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर आल्सो यू हैव टू हैव अ गुड टीम. अब आप छोटा स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़ा स्टार्ट करना, दैट इट विल डिपेंड ऑन द हाउ यू वांट टू स्टार्ट योर रेस्टोरेंट. सो माय फर्स्ट रेस्टोरेंट केपबेरी वाज अ very very high level different kind of a first of its kind restaurant in India with 120 seats. So I had a good team of people who joined me 6 months before the pre-opening. Right. Opening से 6 महीने पहले ही मेरे जो मेन टीम है उन्होंने मेरे को ज्वाइन कर लिया था. तो because you cannot do everything on your own, so you have to make sure that you are preparing your team for the eventuality that is going to come when the restaurant is going to open. They must see the vision that you have and they must understand what you are planning to do. तो उनकी जो है स्किल सेट्स, उनके भी नॉलेज, उनको भी साथ लेके चलना ये इम्पोर्टेंट होता है.
और जो है आप जब एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको जो है नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस माइंडेडनेस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखना पड़ता है. You are everything. You are the chief worker in general. That's what it is, chief working Right. officer. So that is Right. what you are. So you have to do, you have to be concerned about drain blockage to कोई चीज खराब हो गया तो Right. कैसे होना है, तो आपका मार्केटिंग कैसे चल रहा है, तो आपके जो गेस्ट आ रहे हैं उनको क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्या फीडबैक दे रहे हैं वो. तो ये सारी चीजें आपको जो कि है नजर में रखना है टू बी सक्सेसफुल. एंड आपको Very true. कस्टमर को सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं. ये रेस्टोरेंट कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने लिए खोला हुआ है. एक कॉन्सेप्ट प्लानिंग होना चाहिए. एक उसको जो है किस तरह से हमने चलाना है, किस तरह का खाना हमने सर्व करना है. इट शुड बी बेस्ड ऑन अ मार्केट सर्वे एंड यू नो व्हाट is it that you are bringing new to the market. There are two ways. One is that you open another restaurant which has been a model of which has been successful, or you open something that is new that you are bringing to the customers. तो हमने जब खोला केपरबेरी तब मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी या फिर जो है जिसे आप कहते हैं मॉडर्निस्ट क्विजीन, वो इंडिया में पहली बारी हम लेके आए. और हमारा जो है रेस्टोरेंट का बेस था स्पेनिश और इटालियन, और इंडिया में स्पेनिश रेस्टोरेंट भी तब नहीं थे. तो हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत नए तरीके से लोगों को खाने का अंदाज पेश किया. राइट. एंड अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपने ऑब्वियसली काफी शेफ्स भी हायर किए हैं अपने कंपनीज में, और आप खुद भी शेफ रह चुके हैं. अगर 4 से 5 इम्पोर्टेंट स्किल्स की बात करें, सो आप क्या वो 4 से 5 इम्पोर्टेंट स्किल्स देखते हैं एक शेफ में? देखिए जी, 4 से 5 इम्पोर्टेंट स्किल्स तो आपको पहली बात बता सकते हैं कि पहले तो आपको कुकिंग स्किल और नॉलेज आना चाहिए. नॉलेज, राइट. सो यू मस्ट ऑलवेज मेक इट अ point to learn through various means and methods, and also work personally in the kitchen to make sure that you are able to master your skills. Kitchen is a skill job. It is both an art and a science, and you have to understand it technically as well as in terms of its level of skill. तो वो तो एक बहुत important है. दूसरा, you have to be a hard working person. So it is not easy to be in hotels when you are, or in the restaurant industry when you are junior and young. You have to spend a lot of time in the job, sometimes beyond very, very long hours, and also you start sometimes in the morning and end at midnight. So basically, you have to be willing to, give a large part of your time to, achieve what you want to achieve. So also, when you start your career, it's not always the best paying job. So it takes time for you to prove yourself and gain your worth in the market. तो आपको ये जो है, पहली बात तो बताया, आपको स्किल चाहिए. दूसरी बात तो ये चाहिए कि आपको ये करना है कि you are open minded in terms of ready to work hard. तीसरा ये है कि आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना पड़ता है आपके. टू कम्युनिकेट विथ योर टीम एंड टू क्रिएट अ टीम वर्क. तो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह होता है ये किचन. तो जब ऑर्डर्स आते हैं आपके रेस्टोरेंट में, 100 जने बैठे हुए, अलग अलग लोग अलग अलग चीज ऑर्डर कर रहे हैं, अलग अलग वक्त में फूड भी ऑर्डर कर रहे हैं, ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर रहे हैं. हर चीज जो कि सीक्वेंशियली और सही टाइम पे सही पक के जाना चाहिए. उसके लिए क्या तैयारी करना पड़ता है, कैसे प्रेप वर्क करना पड़ता है, जिसको मीज़ा प्लस कहते हैं. So these are all very critical. So you have to be also enjoying, the mundane with the special. ऐसा नहीं है कि आप तो आजकल तो सब लोग टीवी में देखते हैं शेफ को, सब सोचते हैं सब लोग सुपरस्टार हैं. वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है. शुरू में तो आपको जो है मेहनत करना है, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम नाम किसी का आ रहा है. ऐसा नहीं होता है. If everything comes with time, and you have to have a vision for yourself to do that. So ये है. और ये you have to be always good with your numbers, and you have to be a knowledgeable person in terms of your business sense also. So that you can manage the numbers well in your restaurant and in the business, and you can look at the profitability and drive that business sense of the thing.
और पांचवा बात ये है कि you should be ready for the long haul. So you have to have a dedication and you have to have a stamina to move on for a long haul. Right. So, talking about the skills, where do you think that the students right now, वो learn कहाँ से कर सकते हैं? You know, the culinary skills in F&B sector. What are the options for students to learn? देखिए आजकल जो है इंडिया में पहले सिर्फ होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस हुआ करते थे जो कि सारे डिपार्टमेंट है। आजकल स्पेशलाइज्ड culinary स्कूल्स खुल गए हैं, जैसे कि वाक्शा हैं उधर मणिपाल में, फिर औरंगाबाद में IHM औरंगाबाद है जहाँ पे culinary है, यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में जहाँ पे culinary कोर्सेज अलग से स्पेशलाइज करते हैं, और फिर जो है इस तरह के culinary स्कूल्स खुल गए हैं। Symbiosis है, then there is Indian Culinary Institute as well now, MBA in culinary as well. Yes, but I think that is something that we can discuss later, because I don't believe that that is so critical at this point in time. You can do it as a what you call is an extended course later in terms sometimes in your life, but it is not essential that right in the beginning you do that. Right. इसके अलावा जो है F&B के लिए जो है स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस ये हैं कि आजकल बारटेंडिंग स्कूल्स खुल गए हैं। फिर जो है आप जो है किचन में भी फर्दर उसका स्पेशलाइजेशन हुआ है बेकरी एंड डेजर्ट्स के लिए, तो उसके लिए जो है इस तरह के जैसे एकेडमी ऑफ पेस्ट्री आर्ट्स हैं इंडिया, और उसके बाद आपके बाद लवॉन एकेडमी है, वाइट कैप्स शेफ्स एकेडमी है, तो ये सब जो है एकेडमीज और इंस्टीट्यूशंस हैं वो they specialize in bakery and confectionery, so which is but IHM also now has diploma in bakery and confectionery. Yes, diploma courses. वो पहले था लेकिन वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते थे, लेकिन ये जो आजकल खोले हुए हैं इन्होंने जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो they are run by very specialized people who have been very successful chefs themselves in the industry, and इससे जो किया फर्क पड़ा है। तो आजकल जो है आपके पास if you want to do hotel management, that is also possible, and you want to choose a specialization right from the beginning also, it is possible. Right. So also a new course has also come, which is BVOC now, Bachelor in Vocation in Hotel Management. Right. So that also can be specialized in any of these areas that you've talked. Yes, definitely. Just adding on, Yeah, definitely. Right. So, you want to add on to this? No, I just wanted to say that beyond after studying your, graduation, you can do your post-graduation, and this you can is possible in India also, but also there are many colleges abroad. Also, a lot of Indian students are going to the world-class, universities and colleges like the Culinary Institute of America, Singapore में है at Sunrise, Johnson University जहाँ पे मैंने गया था। तो ये जो किए आप जो किए as a extended course आप कर सकते हैं। Right. You even at the starting, of the conversation, you talked कि entire chef hotel management industry बहुत glamorous लगता है बाहर से, right? And जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितने challenges हैं। So मेरा next सवाल ये है कि आप कुछ ऐसे negative या not so positive areas बताइए of working as a chef. So I met a head chef, he actually वो मेरे as a parent आए थे अपने बच्चे की counseling के लिए, and वो मचान restaurant है एक ताज दिल्ली में, so उनके head chef थे। In fact, he was also born in Bengal and then shifted to Delhi. I'm forgetting his name. It's around 4 or 5 years back. Okay. And मैंने उनको बोला अपने बेटे को शेफ नहीं बनाना चाहते, मतलब बिल्कुल नहीं। Because बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है, but it's very hard working, बहुत effort लगता है, working in the environment of a kitchen, that is also very tough. आप उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये जो पूरा ग्लैमरस है बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि क्या-क्या challenges है इसमें। देखिए challenges तो hard work का तो कोई हाँ, वो तो सभी फील्ड में होता है। हाँ, बिल्कुल। So as I mentioned earlier कि timings का जो कि बहुत ये होता है, particularly शुरू में और even towards the end of your career, क्योंकि आपका जो है दूसरे लोगों का जब छुट्टी होता है, दूसरे लोगों का जब ये होता है, आपको उस टाइम पे जो है काम करना पड़ता है। So you are supposed to be
in the restaurant or in the hotel in the evenings when others are having a good time, or if it is a festivities that are going on, that is the time when the hotels are the most busy. Yeah, right. Also, if you don't enjoy being a restaurateur or a hotelier or a chef, it is very difficult to pursue it, because it comes with a lot of effort. You need to really put in a lot of effort. I say that there are easier ways to make a living than being a chef. So that is what it is. So, but that doesn't mean that, it's not exciting or interesting. So because it is a very, very exciting and ever-changing field, so people are very much interested in continuing their career. But Right. what I would like to say here is that if you want to really talk about negatives, it's the first 5 years, which is very, very tough, where the salaries are not very this thing. And then if you are not in a well organized, in a good company, then, things are not very well organized. So there could be some exploitation, there could be some rules or regulations are being flouted. And, so those are the things that you can face or come across when you do Right. something. Also, sometimes after doing a hotel management, if you do not have good communication skills, if you are not smart enough, then you may not land up the job of being a management trainee. And, Yeah. 80% to 70% of the people don't get the opportunity. Only 20 to 25% get the opportunity to become a management trainee. So the rest Right. of them have to work their way up from this thing. So Right. I was lucky, but I would say even joining as a management trainee, it is really, really tough to, work, because there used to be sometimes. I was initially in Taj Palace Hotel, and there used to be times where there were 18 hours of work on a regular day. I have Wow. not gone home for sometimes 2 days continuously. So basically, it would depend on the quantum of work, and it is just that, ऐसा है नहीं कि ये फाइल का वर्क है, आज नहीं तो कल हो जाएगा. आपको ब्रेकफास्ट सर्व करना है तो ब्रेकफास्ट सर्व करना ही है. So you have to, cannot say that we'll give it during lunchtime. I could say in the last 5 or 10 years, there's been a lot more advancement. So today, Right. in some of the good places, you can see world-class products being made. So that is what I would like to say. So Right. there's been a great improvement, and there has been a lot of such baking and pastry courses which has come up. And as a result, you can go and study these courses, and you can specialize in bakery and confectionery. Right. This is something which has come up again and again, when we had Prasad also coming up talking about fashion industry and sector, he said that textile is very important for a fashion designer. जब तक आप textile को नहीं जानेंगे, when Shivani came in, she talked that, okay, in singing, guitar, learning one musical instrument is very important, right? वैसे ही chef में, I think the tools that you use and knowing about them, the kind of knife that you use is also very important. It is. Right? True. So there are today a lot of high-tech equipment that is also used in the kitchen. So, if you talk about avant-garde cuisine or modernist cuisine, उसमें तो इतने सारे equipment use होते हैं जो मैंने पहले country में लाए, starting from sous vide cooking to PacoJet to things like dehydrators, to so many things that are being used. Special distillation equipments to get the perfect aroma and the aromatic oil, to extract the aromatic oil. So there are so many things that is used in there. There are specialized ovens which are called the combi ovens, which are there, in the kitchen. So all of these run on technology. They're very, very high and precise engineering products which you have to know about. So you must know about your equipment, and then you must know about your ingredients, how the ingredients behave in different kinds of cuisine, what are the ideal things, how they are grown, what is their, the provenance basically of an ingredient. So it's very important to understand that where it is coming from, how it is grown, how whether it is grown organically or how much pesticide has gone into it. So you must go back to the farmer and also try to connect with them to see that, the produce that you get is of high quality,
because only a good quality produce can make good food. Because it doesn't matter how you try, how much hard you try, if your quality of your produce or the ingredient is not up to the mark, you cannot reach the quality level that you're looking at. So basically, it's very, very important that you look into the quality of your ingredients that you're procuring. You need to support your farmers, because basically they are the producers who can give you the good ingredients, and they can, and all your purveyors, whether it is a farmer, whether it is a a butcher, whether it is your poultry person. So everybody, the entire supply chain has to be well managed to make sure that you are able to give good food, and you should stay connected with them. Very important, very important. Who has inspired you in this journey? Tell us some of your role models, some inspirational figures. It could be a couple of them at various part of your journey, and why have they inspired you? And someone has also asked this question. So basically, I would say that my first inspiration was my executive chef when I was working with the Taj. Within 3 years of my joining Taj, she became the executive chef. Her name is Chef Neeta Nagraj. So she was my executive chef. She has, when I used to work there, that is the time when all the heads of state and everybody used to come and stay at the Taj Palace or the Taj Mahal. So most of the time we used to get heads of states coming there. Then we used to get the Indian cricket team who used to come and stay there. So there was a lot of, people and celebrities who used to come and stay there. And it used to be an extremely busy hotel. It's a 500-room hotel with very, very, one of the largest banquet spaces till date in India. So, managing such and we had 5 restaurants and then 1 nightclub. And then there was a lot of activity all the time. So from her, I learned how to, stay calm and, under all circumstances, and, manage the show in a manner where you are not getting worked up, because it is easy. Sometimes you're giving food for up to 10,000 people per day. So it is under different situations. It's not that कि सबके लिए same खाना बन रहा है, ऐसा नहीं है. आपका caterings होता है, अलग-अलग embassies में caterings होते थे, अलग-अलग लोगों के बड़े-बड़े घरों में और farm house में भी caterings होते थे. फिर बड़े-बड़े banquet parties होते थे, जैसे कि conferences, शादियाँ, तो receptions, तो बड़े-बड़े international conferences होते थे. तो ये सब चीजें होते थे. तो वो मैंने देखा कि उनके अंदर एक ability थी हर एक चीज को बहुत ही कामली करने का और लोगों को प्रोत्साहन देने का. तो इसलिए मेरे को वो बहुत अच्छे लगते थे. मेरे को बहुत इंस्पायर किया उन्होंने, मेरे को बहुत ही एनकरेज करा कि जो है, क्योंकि मैं शुरू में मैं भी बहुत ही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि वो किचन में जो है एनवायरनमेंट जो होता है उसको मैं भी तंग आ गया था थोड़ा बहुत. मैं क्योंकि मैंने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करी थी सारा टाइम में, तो उसका एक एनवायरनमेंट अलग होता है, किचन में एक एनवायरनमेंट अलग होता है. तो इसीलिए उन्होंने लाके, वो जब किचन में आए तो उन्होंने एक जो है एक शांतिपूर्वक और एक जो है बेहतरीन एनवायरनमेंट और इनकरेज करने की कोशिश क्रिएट किया. तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. और जो है नीता नागराज इज हर नेम. नीता नागराज, हाँ जी. फिर उसके बाद बहुत सारे शेफ्स हैं जो इंटरनेशनली हमें इंस्पायर करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिनके काम बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जिनकी हम किताबों से सीखते हैं बहुत चीज़ें, की किताबें पढ़ के, उनसे देख के हम उनसे सीखते हैं. ऐसी थॉमस केलर है जो फ्रेंच लॉन्ड्री के हैं, फिरान आद्रिया है जिन्होंने अलबुली नाम के रेस्टोरेंट खोले थे. तो इस तरह के शेफ्स बहुत हैं. इंडिया में भी बहुत सारे शेफ्स हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं. तो हमारे एक और शेफ थे, शेफ अरविंद सारस्वत, जो जिन्होंने मुझे रिक्रूट करा था बेसिकली, जिनकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे जो भी मिला है तो उनकी वजह से था. He passed away last year, but he was a great man. And so I think there are many people who keep inspiring you. So there are many chefs in India who keep inspiring me, whether they're younger to me, sometimes they may be elder to me. But there are many chefs who introduce this. You can always learn from each other and can keep your eyes open, and you can keep getting inspired, not just from big people. You can also get inspired from people who are working under you, with you, along you. So that is what it is. I don't believe that inspiration only has to come from the top. It can come from within, it can come from the bottom, it can come from your side. So that is what it is. So I think that
this is very critical for us to understand that, inspiration can come from different places. And there is a story that I'd like to share, which I feel is one of my biggest achievements, is that we had participated in the Bocuse d'Or Asia Pacific. वो एक जो है, it is like the Olympics of the of the chef's world, of the chefs. Right. So where you don't participate as an individual, you participate as a country. तो पहले कंट्री का कंपटीशन जीतना पड़ता है, फिर उसके बाद आप एशिया पैसिफिक में जाते हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल में. Right. तो हमारे जिन्होंने रिप्रेजेंट करा था, मेरे ऑर्गेनाइजेशन केपाबेरी का टीम जो है, we represented India in Bocuse d'Or Asia Pacific in 2018. Right. And we were the first country to win. For the first time, India won a medal in this competition after 30 years. Amazing. So but the main competitor for this thing was a person who joined in the lowest level, in the level where you just do the cleaning and the dishwashing work, and then you become to represent your country, and then also you win the first ever medal in such a prestigious competition in India. So that has been a very proud moment for me, as far as I am concerned. Amazing. That can be a amazing story. Absolutely. This was a very unconventional field, and हम उस समय की बात कर रहे हैं 80s में, और आपने कहा कि आपने 12th में मेडिकल भी लिया था, साइंस PCB भी लिया था, and then you went on to hotel management. How what was the reaction? आपके पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे? Were they supportive? And how did you overcome them if they were not supportive? I think that my father has been the most generous with me in terms of this thing. उन्होंने कभी भी कोई चीज मेरे ऊपर फोर्स नहीं करा. हाँ, वो डायरेक्शन देते थे कि आगे इस तरह से जाना है, लेकिन जब मैंने डिसाइड करा कि मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करना है, तो उन्होंने शायद खून के घुट पी ली, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उनको. उन्होंने उसमें भी मेरे को हमेशा encourage करा. So he has always been my guiding light, and he always keeps encouraging me in whatever I have done so far. So that is not the case with many people. Many people in that time used to get upset that क्या बावर्ची बनने जा रहे हैं, waiter बनने जा रहे हैं, क्या हो रहा है. So my parents were not, but he came. He was shocked a bit. This was in. I have to tell you something, that this was in when we were in the 3rd year. सूरज कुंड में पहली बारी क्राफ्ट्स मेला हुआ था, तो करा गया था टू हेड. तो हम लोगों ने, होटल मैनेजमेंट वालों ने भी, हमने अपना जो है वहाँ पे एक फूड का स्टॉल लगाया था. तो फूड स्टॉल में हमारा जो है था, वहाँ पे था हैदराबाद से कुछ IHM हैदराबाद से आए थे, IHM मुंबई से आए थे, और IHM बैंगलोर से थे. तो हम लोगों ने जो है अलग अलग रीजन्स के इंडियन डिश को हमने पेश करा था. लेकिन वो जो एनवायरनमेंट बनाया गया था, वो तो दिल्ली से 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर दूर था उस टाइम पे, और वो के सारे हट्स टाइप के बनाए थे, जंगल. तो वो फर्स्ट टाइम था. काफी फेमस हो गया है वो क्राफ्ट मेला अभी. इट्स लाइक ह्यूज फेस्टिवल एवरी ईयर. बहुत उसका पब्लिसिटी हुआ था, बहुत ही ज्यादा. पियर कार्दर का फैशन शो हुआ था वहाँ पे, जो है फ्रेंच डिजाइनर थे, उनका फैशन शो हुआ था उसमें. तो सब बहुत लोग आए थे वहाँ पे. हमारे तब एक बहुत ही स्टार जिनको हम फॉलो करते थे, वो थे सिद्धार्थ बासु, जो क्विज टाइम के उस टाइम पे एक प्रोग्राम होता था टीवी पे, क्विज टाइम. तो वो भी आए. तो हमें तो बहुत अच्छा लगा तो उसमें पार्टिसिपेट करने. तो मैंने बहुत ही प्राउडली मैंने बताया मेरे डैड को कि डैड, ऐसा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हो रहा है, तो मुझे वहाँ का हेड चुना गया है हमारे स्टॉल का, आप आइए ज़रूर. तो मेरे फादर आए तो थोड़े से हताश हो गए. उन्होंने देखा कि मेरा बेटा दार्जिलिंग में जाने के बाद, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के बाद, होटल मैनेजमेंट करते हुए बोला कि ये सबसे उनका बड़ा अचीवमेंट है. वो एक जो है हट के अंदर बैठ के खड़े होके पराठे बेल रहा है, ये देखने को. So he was a little disappointed. Also, he felt that in the early years of my life, I had to struggle a lot in terms of, your financials. So so he even supported me even with his with financials, even for the first
I think 8 to 10 years of my this thing, because living in Delhi was not reasonably Yeah, yeah. so basically after 8 years or so, I found a footing in a way where I could make enough money to say that I can stay comfortably in a city like Delhi. Right, right. I'm sure he would be proud today. I hope so. I have no doubts about it. So, this question has been asked again and again as well by a lot of people right now on YouTube. They are asking queries as well. What are the top 3 challenges you have faced in your professional journey? And आपने इसको overcome कैसे किया? कौन से वो 3 ऐसे major challenge थे? Just couple of challenges. If you could share some of the moments that okay, these are. जैसे आपने एक बताया जो कि हम समझ गए कि शुरू के टाइम में आपको किचन environment ठीक नहीं लगा, and your head Neeta ji really helped you in that. So that was one challenge, obviously. Yes. But can you share a couple of more with us? As I told you, that financial challenges also we faced in the early part of my this thing, which was very. And I think this is a very important part to note. बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, right? ये कि जैसे कि hotel management, chef, even journalism, these are certain careers जहाँ initial 5 to 8 years financially आपको बहुत maybe आप उतना नहीं कमा पाते, unlike probably comparable career to let's say engineering, right? But आगे जाके growth बहुत high होता है. हाँ जी. So whenever you get the chance, so वो सारा makeup हो जाता है फिर आगे जाके. So you tend to earn much better when you have certain experience. People value you, that you are able to because everybody believes and thinks that for a restaurant or hotel business, the heart is in the kitchen. And you talked about this, that there are a lot more options now. Now you have this concept called as cloud kitchen. Yes. Wherein you create a cloud kitchen, like company like Fasus and many others now. In biryanis only, you have cloud kitchens now. Huge, going very big, and with the help of companies and products like Swiggy, Zomato, they're able to sell, in home delivery. What do you think about them? Do you think that with even this coming up, the requirement for chef has actually increased? No, see, the thing is that it is a very, it's a recent and a good development, and it worked very well during the time of the pandemic. Right. So I think that, for me, I never saw kitchens in that kind of a manner. ये जो है किचन्स तो इस तरह के क्लाउड किचन्स तो शुरू में ही थे, उसको कॉमिसरीज बोलते थे, जहाँ पे आप जो कि है प्रेप वर्क करके या फिर हाफ डन करके या फिर कुछ भी चीज फिनिश करके एक जगह से आप अलग अलग आउटलेट्स में या फिर अलग अलग जगह पे भेजते हैं. तो सिमिलरली जैसे एयरलाइन केटरिंग होती है, उसका भी जो है किचन ही रहता है. सो बेसिकली क्लाउड किचन का क्या है कि कोई फेस नहीं है. राइट. तो लेकिन जिस तरह से जो एक रेस्टोरेंट का जो मजा है, एक्सपीरियंस है, वो आपको जो है ये क्लाउड किचन जो हम सभी मिस कर रहे हैं अभी, जो हम सब अभी मिस कर रहे हैं. So it may make some business sense for some people, but I don't think so that it is something that is gives you the full joy of running a restaurant. So clean food, organic food, vegan food in India में ये कितना catch up कर रहा है अभी, and I think this is your specialized area as well. This is an area of interest as well. For me, it is not just it is an area that I want to work for the future throughout my entire career. So this thing should be based on every action that you should take as a chef, as a restaurateur, should be now based on sustainability. The time is gone where you can say that climate change and the usage of single-use plastics is is a very dangerous thing. It has already happened. It is already no longer coming. It has already happened. So we need to reverse this. We have to be more sustainable. We cannot, keep feeding people food which is full of chemicals and pesticides. We cannot, keep wasting food, and we cannot, waste water. We must be creative, and we must be conscious about the consumption of any source of energy or natural resource that we are using. So you have to also support and educate your farmers. And I do believe that India is a
first country to introduce organic farming. In fact, the whole world was organic before, and we can again become organic. लोग कहते हैं कि organic food grow करना मुश्किल है, क्योंकि वो आजकल महंगा इसलिए है क्योंकि हम कम क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हैं. कम क्वांटिटी में करें आप. मैंने ये आइडिया पहले भी दिया हुआ है बहुत बारी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो जो बड़े कंपनीज हैं जिन्होंने जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करा था, वही लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैसे लगाएं तो दिस कैन ब्रिंग अबाउट द बिगेस्ट चेंज. आप छोटा काम करके, छोटा छोटा चीजें करके, जो कि जितना टाइम लगेगा उस टाइम हमारे लिए निकल चुका है. नाउ इट्स टाइम फॉर बिग स्टेप्स टू बी टेकन. सो इट इज नॉट अबाउट taking just small steps and doing your own thing. It's not good enough anymore. So we have to be conscious. We have to be conscious about what we are eating, what we are feeding to our customers, what your family is eating, and we have to clean up the food chain, and we have to ensure that we are able to contribute towards sustainability, reverse the wrong things that we are doing, and for the conservation of the Mother Earth and for nature. And it is something that I will do anything to support. And for me, anybody who wants support in this direction, I'm ready to help, both as an advisory as well as in any way that they need. I do believe that jab iska volume zyada ho jayega, that is the time when things will become more this thing. I know it is expensive to grow, but always volume can always play the game, can always mitigate your there are also companies now, like in Delhi there is a company called as I Say Organic. मेरे एक दोस्त है अश्मीत जी, उन्होंने चालू किया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है. And online you could order organic vegetable. They are like, I think the largest now in the country, e-commerce organic food. And the biggest challenge जब उन्होंने चालू किया था उनके लिए ये था कि कैसे वो जाके farmers को educate करें. We actually spent time with large farmhouses, in Haryana, in Uttarakhand, in Punjab. And वहाँ जाके उन्होंने 2 साल पहले farmers establish किए. Then he started the e-commerce platform. The idea was only e-commerce, to sell organic food, vegetables, fruits through an e-commerce platform. But जब वो जाके देखा तो the supply was not there. So he had to spend 2 years to educate them, and तब वो इन्होंने ये चालू किया. I think that is what you are also saying, in the similar fashion. So I'm glad that your friend is doing this, but what we are doing is right now a drop in the ocean. बहुत जरूरी है कि हम आगे आने वाले दिनों में, I think जितने भी बच्चे अब इस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये जरूर समझें कि हमें सस्टेनेबिलिटी को देख के आप इस जॉब में जाएं, और जब भी आप चालू करें इस चीज को प्रमोट करें, इस चीज पे कोशिश रखें कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम को सस्टेनेबल बना सकें. बहुत जरूरी है. Thank you so much, Abhijit ji, for coming today and taking out time for 1.5 hours approximately with us. I think it's very important that students को पता चले कि exactly इस profession में क्या होता है, and I think especially hospitality, chef, इन careers की बहुत कम जानकारी बच्चों को है, और बहुत सारे myths बहुत ज्यादा हैं. I think आज आपको सुन के इन myths और काफी सारे facts उनको पता चले होंगे. So I think your inspirational journey altogether, and I'm sure you've inspired many students today. Thank you so much for joining us today.